Today we are going to do the second part of maths chapter percentage, and this part is mostly it has all the word problems. So let's begin with this part. Okay, so the first question: there are 75 apples in a basket, of which 12% are rotten. How many apples are good enough to be sold? Okay, total number of apples is equal to 75. Percentage of rotten apples is equal to 12%. Number of good apples, question mark, right? Now we can find the number of rotten apples. Number of rotten apples is equal to 12% of 75. 12% of 75. That is 12 upon 100 multiplied by 75. 25 threes are 25, fours are 4 threes are. So number of rotten apples will be 3 threes are 9. Therefore, number of good apples 75 minus 9. 75 minus 9 is 66. So 66 apples are good enough to be sold. So I have explained how to write statements, what should be the steps, right? You should not write the direct answer in these particular kind of questions. So you should be able to explain that how you are solving. That is the whole idea, right? So number of good apples is 66. Next question. These are all solved examples, so you can check the answers in the textbook. Rahul spends 85% of his salary and saves 3120 per month. Find his monthly salary. So let Rahul's monthly salary be rupees X. Now in the earlier question, the apple one question, you could have taken the number of good apples to be X, right? But in this question, because we have to find the total amount, total salary, so that total value, if you take it as X, then it is easier to solve. So Rahul spends 85% of his salary and saves rupees 3120 per month. So Rahul's savings is equal to rupees 3120. Now expenditure, spends means expenditure. Expenditure percent is equal to 85%. So what will be savings percent? Saving percent will be 100 minus 85, which is 15%. Correct? If he is spending 85% of its salary, the total percentage we have to take it as 100. Then what will be the savings? Total percentage minus the percentage of expenditure, that is 15%. That is the savings. So therefore we can say that 15% is saving and the amount of saving is rupees 3120. So 15% of total salary is how much? X, is equal to savings, that is 3120. So we just have to solve this. 15 upon 100 multiplied by X is equal to 3120. So X is equal to 3120 multiplied by 100 upon 15. I took 115 to the other side. 3 5s are 3 1 1040 are, right? 1040 multiplied by 3
will be 312, and 5 uh, 5 20s are. Now 1040 multiplied by 2 will be 2080, and there is one more 0 here. So his salary, Rahul's total salary, monthly salary is rupees 20,800. Easy. So if you know percentage well, word problems are simple. Word problems are not difficult. Next. On increasing the price of a shirt by 18%, it becomes 826. What was the original price? Again, let the original price of a shirt be rupees X. Let the original price of a shirt be rupees X. So what we are doing with the price of the shirt? We are increasing it by 18%. So X plus 18% of X. X plus 18% of X. If you are increasing something, you cannot write just X plus 18%, because you cannot add a number with percent. You have to add a number with percent of the same number. That is X plus 18% of X. 18% of what? 18% of the same number X. So if you increase it by 18%, this is known as increasing by certain percent. Okay, we have studied about increasing by certain percent in the first part. The final price becomes, the new price becomes rupees 826. What was the original price? Let's calculate. 18 upon 100 multiplied by X is equal to 826. So this is 100X plus 18X upon 100 is equal to 826. So 118X is equal to 826 multiplied by 100. So X is equal to 826 multiplied by 100 divided by 118. Now can 118 be divided, can 826 be divided by 118? Let's check. 118, 8 8s are 64, 8 6s are 48. I'm just checking whether in units place we can get 6 or not. 118 sevens are maybe 8 sevens are 56, 8 sevens are 56, 5 7 ones are 7 plus 5 12, 7 ones are 7 plus 1 8. Correct. 8 118 sevens are 826. Right? So X is equal to 7 into 100, that is 700. So what is X? Original price of the shirt. Therefore, original price of shirt is equal to rupees 700. Correct? So that is question number 3. Solved example 3. Let's go to the next question. On decreasing the price of a tea set by 8%, it becomes rupees 317.40. What was its original price? Let the original price of a tea set be rupees X. So what we are doing, we are decreasing the price of the tea set. Therefore, X minus 8%. Is it correct? No. X minus 8% of X. It becomes 317.40. Let's solve this. X minus 8 upon 100 multiplied by X is equal to 317.40. So this becomes
100x minus 8x upon 100 is equal to 317.40. This is okay. 100x minus 8x is 92x is equal to, this 100 will get multiplied over here, 31740. So x is equal to 31740 divided by 92. So let's divide 3174 by 92. I think 92, if I want 3174, see 92 tens are 920. Okay, and 3174 is quite a bigger number than 920. So I think it will be divided by a double digit. So let's do proper division without, you know, just without just assuming that what will come. So 92, okay, see 95 is 450, which is very much greater than 317. 94 is 360, still greater than 317. 93s are 270. So 92 threes are how much? 6, 276. 92 threes are 276, and you get 7 minus 6, 1. 31 minus 7, 27, that is 4, and this 4 will be brought down. Okay, so 92, again you cannot go, you can go 4s now. 92 4s, so 92 multiplied by 4 is 368, which is smaller than 314. So 92 4s are 368. You will subtract this, so you are going to get 14 minus 8 will be 6, this will be 0, this will be 10, this will be 3, 10 minus 6 will be 4. Okay, so you will get 0 down, and I think 92 5s will do the trick. 92 5s are 9 2s, 5 2s are 10, and 9 5s are 45 plus 146, 460. So 92 5s are 460, and you get 0 as remainder, right? So if we divided it and we got it as 345, the division yield 345 as quotient, and therefore we can say, write the final statement in words in a statement. The original price of tea set is equal to rupees 345. So why I'm doing all these solved examples for you is because you know, you will understand the method with which you have to solve the same kind of examples when you face them in the exercise. I don't want to solve the exercise for you, because if I solve the exercise for you, then you will not have any challenge. So in order to get that challenge properly, in order to, you know, get the idea that how to solve these kind of questions, you must understand the method with which I am solving the solved examples. Solved examples are very important because they actually are of the same kind of questions which are asked in later in the exercise. Only the, you know, quantities or the numbers are changed. The pattern of the question will remain the same. So if you know how to solve the method for a particular pattern of question, then you can apply it in any question. So that's why I'm solving solved examples for you. So you should know the exact pattern of how to solve the questions. Let's do the next one. An alloy contains 14% tin, 27% zinc, and the rest iron. Okay, so we have 14% tin, we have 27% zinc, and iron, we don't know how much will be the iron. What percent of iron
We don't know, so we can find out. So percentage of iron is equal to 100 minus 14 plus 27. 100 minus 14 plus 27, that is 100 minus 14 plus 27. So 7 plus 4, 1, 11 and 41. 100 minus 41, that is 59% iron. What is the percentage of iron? 59%. Find the quantity of iron in 1.2 kg of this alloy. Okay, so let the quantity of iron in the alloy be x kg. Therefore 59% of 1.2 kg is equal to x, right? This is the total quantity of alloy and this is the percentage of iron. So 59% of the total quantity will be the weight of iron. That is what you have to find, the quantity of iron. So 59 upon 100 multiplied by 1.2 is equal to x. Let's calculate this. 59 multiplied by 12. Okay, so I'm getting 70.8 because 59.12, right? So x is equal to 70.8 upon 100. That is 0.708 grams. Hey, 0.708 kg. 0.708 kg. Let's check the answer. So we have our textbook with us. Just a moment, let me check the answer of all these 5 questions which we have done. I remember the answer. Yes, 66 apples were good enough to be sold. Rahul's salary 20,800, that is also correct. 700 original price of the shirt, that is also correct. Let me check that again, I'm not sure about 700. 345 is correct, the original price of tea set. 708 grams or 0.708 kg, that seems correct. Let's check the shirt wala question. Yes, that is correct. So all are correct. Till now all the questions are absolutely correctly solved. Okay. Question number 6. In an election, there were only 2 candidates. The winner obtained 56% votes and won by 8,400 votes. Okay. So only 2 candidates, right? Percentage of votes obtained by winner is equal to 56%. Therefore, percentage of votes obtained by loser will be 100 minus 56, which is 44%. Correct? If winner has got 56% of vote, loser will get 44% of vote. We have to find the total number of votes polled. Let the total number of votes polled
B, X. Total X votes are polled. So what they are saying is the winner won by 8,400 votes. That means the winner got 8,400 votes more than the loser, right? Therefore, number of votes secured by winner minus number of votes secured by loser is equal to 8,400. विनर को लूजर से 8,400 वोट्स ज्यादा मिले ना. So how many votes has winner got? So it is 56% of what? Of the total number of votes, which is X. How many votes has loser got? 44% of what? Of X is equal to 8,400. सिर्फ इसको solve करना है. So this will become 56 upon 100 multiplied by X minus 44 upon 100 multiplied by X is equal to 8,400. Okay, so let's simplify this. So this can be written as, see, I'm doing it over here. Okay, I can do it on the other side also. Yeah, there's a lot of space here. So this can be written as 56x upon 100 minus 44x upon 100 is equal to 8,400. So that is 56x minus 44x upon 100 is equal to 8,400. So 56x minus 44x will be 12x is equal to 8,400 multiplied by 100. 100 will go that side. 56 minus 44 is 12x. So x is equal to 8,400 multiplied by 100 upon 12. So 12 sevens are 84 and two more zeros. So x is equal to 70,000. So therefore, total number of votes polled is equal to 70,000. Correct? Total number of votes polled is equal to 70,000. This is absolutely clear. Okay. Please go through the question again. If you find that there is some issue you cannot understand, you can watch the whole video again. You can watch the whole question solving again. There is no problem, right? Still, if you don't understand, you can ask me. But I don't think that there is such an issue until and unless you are very weak with maths and you have a fear of percentage. But that will be a difficult case because people who have fear, they cannot understand even if if they try a lot. So first you have to let go of your fear, right? And the only way of doing is to change your attitude. Question number 7. A number is increased by 20% and then the increased number is decreased by 20%. Find the net increase or decrease percent. It can be a tricky question because we don't know the number, right? Let's first assume, let the number be 100. Now you must be wondering, why did I take 100? So sometimes you can take the number as x, sometimes as 100. Depends. Okay, so let us try with 100. I can also show you the method of x, but let us try with 100 first. The first step is the number is increased by 20%. So 100 plus 20% of 100. That is 100 plus 20 upon 100 multiplied by 100. That is 120.
So when the number is increased by 20%, it becomes 120. Then the increased number is decreased by 20%. Now increased number is 120. Increased number is equal to 120. It is decreased by 20%. So 120 minus 20% of 100. That is 120 minus 20 upon 100 into 100. Hey, there is a mistake. 120 minus 20% of 120 it should be. Right, so this 0 will cut with this 0 and this 0 will cut with this 0. So this will be 120 minus 24, which will be, what is 120 minus 24? It will be 96, right? So the final number is 96. The final number is how much? 96. The original number was 100. The final number of number is 96. They have asked to find the net increase or decrease percent. So what do you think? After increasing the number by 20% and then decreasing by 20%, has the final result increased or decreased as compared with the original number? Yes, it has decreased. Finally, the number has become 96. So we can say that net decrease is equal to 100, that is original number, minus 96, final number, which is 4. So we have to find the net decrease, increase or decrease percent. So what is decrease percent? Now remember, this is a new formula for you, decrease percent. Please remember the formula and the method, okay? Decrease percent is equal to decrease upon original value, decrease upon original value multiplied by 100. So what is decrease? 4. And what is the original value? 100 multiplied by 100. So this will become 4%. So net decrease percent is equal to 4%. That is our answer. Right? Let's go to the next question. The salary of an officer is increased by 20%. By what percent should the new salary be reduced to restore the original salary? Very tricky question. According to me, as a teacher, I would recommend that you have to put all your logic, whatever you have, into this question. Otherwise, the chances are very less that you will get answer for this question, correct answer. Okay, because this one could be really tricky. Okay, the salary of an officer is increased by 20%. Let the salary of an officer, now what should we take as salary, X or 100? Let's take it as X. Let the salary of an officer be rupees X. So this salary is increased by 20%. So what do we write? X plus 20% of X. What is this? This is increased salary. Increased salary is X plus 20% of X. That is X plus 20 upon 100 multiplied by X. This is 1, this is 5, 25 is 100, correct? So X plus X by 5, or 5X plus X by 5, that is 6X by 5. Increased salary is 6X by 5. By what percent should the new salary be reduced to restore the original salary? Now I have to reduce this new salary. This is the increased new salary, right? I have to reduce it by certain percent to make it equal to the original salary, to restore the original salary.
Now I think you should focus a lot. अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, that's going to be very very important. Okay, so what I'm going to do, I'm going to write a statement. Let the new or increased salary be reduced by y%. I'm writing y because I've already used x. Okay, I've already used x. Be reduced by y%. Let the new or increased salary be reduced by y% to restore the original salary. So what I'm going to do, see, 6x by y, 6x by 5 minus y% of 6x by 5 is equal to x. So मैंने क्या किया, मेरी जो न्यू सैलरी, इंक्रीज सैलरी, उसको ले लिया, उसमें से y% माइनस कर दिया 6x और 5 का, मतलब उसको y% से रिड्यूस कर दिया. आई हैव रिड्यूस द न्यू सैलरी बाय y% टू गेट माई ओरिजिनल सैलरी x. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. नाउ दिस विल बी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल. 6x by 5 minus y upon 100 multiplied by 6x by 5 is equal to x. So what I'm going to do here is, दिस इज वन टर्म, दिस इज द अदर टर्म. ठीक है, इसमें से कुछ मैं कट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ x को बाहर ले रहा हूँ. सो इफ आई टेक आउट x, इट विल बिकम 6 by 5 minus 6y by 500 इज इक्वल टू x. समझ में आया क्या किया? यहाँ से x बाहर चला गया, 6 इंटू वाई 6y, 100 इंटू 5 500. यहाँ से x बाहर चला गया 6 by 5. अभी ये यहाँ भी x बचा है, यहाँ भी x बचा है, दोनों x को कट करो. सो यहाँ पे क्या बचेगा? 1. राइट, अब देखो, 6 by 5 minus 1 is equal to 6y by 500. So what I have to do is I have to solve this and I'll get y. है ना, easy. मैं बताता हूँ कैसे. 6 by 5 minus 1 LCM लेके 6 minus 5 by 5 हो जाएगा and this will be 6y by 500. So 6 minus 5 by 5 will be 1 by 5 multiplied by 500. The whole upon 6 is equal to y हो जाएगा. ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 100 ज़ा और 100 by 6, सो 2 50 ज़ा 2 3 ज़ा 50 by 3. सो y is equal to 16 2 by 3%. इसका क्या मतलब है? टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, the new or increased salary must be reduced by 16 2 by 3%. Must be reduced by 16 2 by 3%. समझ में आया कैसे किया? समझ लो, एक बार वीडियो को फिर से देखना चाहते हो देख लो, बिकॉज दिस वॉज अप टिल नाउ, अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, दिस वॉज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट, मुझे ऐसा लगता है. 16 2 by 3%. चेक करना है आंसर, तुमको ऐसा लग रहा है चेक करना चाहिए? चलो चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 70,000 वोट्स, ये तो सही था. 4% भी सही था. सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 16 2 by 3%. परफेक्ट, सही आया आंसर. चलो नेक्स्ट. B's income is 25% more than that of A. B का इनकम A से 25% ज्यादा है. How much percent is A's income less than that of B?
अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बट इसका पैटर्न अगर समझ जाओगे ना, आगे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें एक्सरसाइज में भी आएंगे, बट इफ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देन the remaining questions will become easy for you. B's income is 25% more than that of A. How much percent is A's income less than that of B? Let's see. B's income is 25% more than that of A. Let A's income, मेरे जो स्टेटमेंट्स है उसको बहुत ध्यान से देखना, लेट एज इनकम बी ₹100, ए की इनकम को 100 ले लिया, देयरफॉर बीज इनकम, बी की इनकम कितनी हो जाएगी 25% मोर देन दैट ऑफ ए, बीज इनकम इज इक्वल टू 25%, सॉरी 25% मोर देन एज इनकम बोला है ना, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, एज इनकम प्लस 25% ऑफ एज इनकम, सही है ना, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, एज इनकम कितनी है 100 प्लस 25% ऑफ 100, इसका मतलब है 100 प्लस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज ₹125. What is this? This is B's income. This is B's income. B's income is 25% more than that of A, ₹125. ठीक है, अब पूछा क्या है, हाउ मच परसेंट इज A's income less than that of B? हाउ मच परसेंट इज A's income less than that of B? अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि A's income 100 है, A का इनकम 100 है, B का 125 है. So first thing what I understand is A's income is ₹25 less than that of B's income, है ना, A की इनकम B की इनकम से 25 रुपीज कम. अब ये कितना परसेंट हुआ ये पूछा है, हाउ मच परसेंट इज A's इनकम लेस देन दैट ऑफ B? A की इनकम B से कितना परसेंट कम है, तो हमें ये निकालना है कि 25 इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ B's इनकम, हाउ मेनी परसेंट ऑफ B's इनकम, ये हमें ढूंढना है. A की इनकम B के इनकम से कितना परसेंट लेस है, 25 रुपीज लेस है, और ये 25 रुपीज कितना परसेंट है B के इनकम का, ये निकालना है. सो 25 इज इक्वल टू x% ऑफ 125. 25 क्या है, x% है किसका, 125 का, तो x% ऑफ 125 इज इक्वल टू 25, ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा. Let's solve this to get the answer. Be very very careful in framing. जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया था ये वाला, ये स्टेटमेंट जो तुम्हें बनाते टाइम बहुत ध्यान रखना है, एंड दिस स्टेटमेंट यू टू बी वेरी केयरफुल. स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन पढ़ के बनाया, अपने दिमाग से नहीं बनाया, ठीक है. क्वेश्चन में पूछा है कि A's इनकम इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन B's इनकम, तो मैंने पहले लिखा कि A की इनकम 25 रुपीज लेस है B की इनकम से, और 25 रुपीज इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ B's इनकम, ये मुझे ढूंढना है. सो 25 इज इक्वल टू x अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 125. 25 इज x% ऑफ 125, ठीक है. सो 25 इंटू 100 अपॉन 125 is equal to x. So 25 5s are 5 20s are, and therefore x is equal to 20%. इसका क्या मतलब है कि A's income is 20% less than B's income.
क्वेश्चन में यही पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था कि ए का इनकम बी से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो यहाँ पे रिलेशन देखो तुम, क्या बोला है क्वेश्चन में, बी का इनकम ए से 25% ज्यादा है, बी का इनकम ए से 25% ज्यादा है। तो तुम सोचोगे कि ए का इनकम बी से 25% कम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं आया। ए का इनकम बी से 20% कम आया। So, the thing which I want to tell you over here is percentage is not a linear quantity like addition subtraction. Percentage is not a linear quantity or linear operation. Quantity से भी ज़्यादा यहाँ पे suitable word है operation. जैसे अगर मैं 10 में से 2 माइनस करता हूँ तो मुझे 8 मिलता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 8 में क्या ऐड करोगे तो तुम्हें 10 मिलेगा, तुम बोलोगे 2। 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 मिलेगा, और 8 में 2 ऐड करोगे तो 10 मिलेगा। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन लीनियर क्वांटिटी है, तुम आगे जाओ या पीछे जाओ आंसर उतने से ही चेंज होगा। लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं होता। अगर ए की इनकम बी से बी की इनकम ए से 25% ज्यादा है तो ए की इनकम बी से 20% कम। ठीक है, ये ट्रुथ है, ये रियलिटी है परसेंटेज की दुनिया में। परसेंटेज का जो पूरा वर्ल्ड है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, वो लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है मतलब कि अगर एक क्वांटिटी को मैं 10% से बढ़ा दूं और फिर वापस उस क्वांटिटी को 10% से कम करूं तो मुझे वापस वो आंसर, सेम आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि 8 को मैंने 2 से बढ़ा दिया तो 10 मिला, और 10 को वापस 2 से कम किया तो मुझे वापस 8 मिला। ठीक है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन लीनियर है। बट यहां पे पहले भी हमने देखा था एक क्वेश्चन में, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, एक नंबर को 20% से इंक्रीज किया और फिर 20% से डिक्रीज किया तो तुम्हें लगेगा वापस सेम नंबर मिलेगा। नहीं, जब 20% से इंक्रीज किया 100 को तो 120 मिला, और 120 को जब 20% से डिक्रीज किया तो 96 मिला, मतलब और कम नंबर मिला। So this proves that percentage is not a linear quantity. Percentage is not a linear quantity. ये तुम्हें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अब ये आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। मेरा आंसर क्या आया, एज इनकम इज 20% लेस देन बीज इनकम। क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये। यस, एज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ बी बाय 20%। तो जैसे वो लोगों ने किया है, ठीक है, मेरा मेथड थोड़ा अलग है। मेरा मेथड थोड़ा अलग है, मेरा मेथड मुझे ज़्यादा इजी लगता है। आई होप तुम्हें भी इजी लगना चाहिए वो, बट आई एम नॉट श्योर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे, तुम्हें टीचर ने कैसे समझाया मुझे नहीं पता। सो मैंने अपने तरीके से, बेस्ट तरीके से मैंने तुम्हें समझाया। 99% बच्चों को मेरे मेथड से समझ में आ जाता है। 99, 1% बच्चे होते हैं जो लोग स्ट्रगल करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्कूल की मेथड के साथ भी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट मेरी मेथड से तुम्हें इजी लगे या स्कूल की मेथड से इजी लगे। इट डिपेंड्स तुम मैथ्स में कितने अच्छे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है मैथ में, उतना तुम्हें इजी लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसके बाद 4 क्वेश्चन और है, देखते हैं इस वीडियो में करना है या और एक वीडियो में करना है, क्योंकि वो सारे लेंदी क्वेश्चन है और अब तक ये 10 क्वेश्चन में मैंने 45 मिनट स्पेंड किया। सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए आज के लिए। आई डोंट वांट टू बर्डन ऑन यू कि बहुत सारे क्वेश्चन किए और सारे भूल गए। अभी तक जो किए वो फंडामेंटल है, अभी तक के अगर समझ में आए तो आगे के इजी हो जाएंगे। तो और एक वीडियो में बना सकता हूँ हाफ एन आवर का टू कंक्लूड दिस पार्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पे जाते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 25%, by how much percent a housewife should reduce the consumption of sugar so as not to increase the expenditure? ओ हो, शुगर की प्राइस 25% बढ़ गई। अब एक हाउसवाइफ को कंजम्पशन ऑफ शुगर को कम करना,
मतलब शुगर को कम कंज्यूम करना है। मतलब उसके पास अगर 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ में पहले वो कुछ शुगर लाती थी, अभी भी उसके पास 100 रुपीज़ ही है, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो अब जो शुगर खरीदेगी वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। सो दे आर आस्किंग दैट बाय हाउ मच परसेंट अ हाउसवाइफ शुड रिड्यूस द कंजम्पशन, कितना क्वांटिटी कम, कितना परसेंट से वो क्वांटिटी शुगर का कम हो जाए, एक्सपेंडिचर उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट द प्राइस of x kg of sugar be ₹100। x kg शुगर का प्राइस हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब शुगर की प्राइस बढ़ गई। आफ्टर इंक्रीज इन प्राइस, न्यू कॉस्ट ऑफ शुगर इज इक्वल टू, शुगर की नई कॉस्ट कितनी हो जाएगी, न्यू कॉस्ट ऑफ शुगर इज इक्वल टू 100 प्लस 25% ऑफ 100। अब x के जी शुगर कितने में आएगा, 100 प्लस 25% ऑफ 100, x नहीं, 100 प्लस 25% ऑफ 100 which is 100 plus 25 upon 100 multiplied by 100 which is ₹125। ठीक है, अभी x kg, therefore now x kg of sugar will cost ₹125। ठीक है, अब x kg की कॉस्ट कितनी हो गई, 125 हो गई। अब she has a target to not to increase the expenditure, मतलब हमें 100 रुपीज से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। we don't have to spend more than 100 rupees, we shouldn't spend more than 100 rupees। तो अब 100 रुपीज में कितना केजी शुगर आएगा वो देख लेते हैं। सो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, यूजिंग यूनिटरी मेथड। बहुत बच्चों को आता होगा, नहीं आता होगा देख लो, सीख लो। यूजिंग यूनिटरी मेथड, यहां पे मैं लिखता हूं क्वांटिटी, क्वांटिटी, और यहां पे मैं लिखता हूं कॉस्ट। ठीक है, अब x kg शुगर की जो क्वांटिटी है उसका कॉस्ट है ₹125, तो ₹100 में कितना केजी शुगर आएगा, राइट। इट विल बी 100 इंटू एक्स अपॉन 125, 25 4 जा 25 5 जा, एंड द आंसर विल बी 4x अपॉन 5 रुपीज। कितना आंसर आएगा, 4x अपॉन 5 रुपीज। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अब जो शुगर की कॉस्ट होगी दैट विल बी 4x अपॉन 5 रुपीज, 4x अपॉन 5 kg, I'm sorry 100 रुपीज में नाउ वी आर गोइंग टू बाय 4x अपॉन 5 kg ऑफ शुगर, kg है ये, रुपीज नहीं है। 100 रुपीज में आई एम गोइंग टू बाय 4x अपॉन 5 kg ऑफ शुगर। ठीक है, तो मेरा कंजम्पशन कम हुआ या बढ़ा। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इनिशियली द हाउसवाइफ यूज टू कंज्यूम x kg ऑफ शुगर, ठीक है, but now the consumption has reduced to 4x upon 5 kg of sugar। कौन सा ज्यादा है, x या 4x upon 5? ऑफ कोर्स x ज्यादा है, 4x upon 5 तो x से कम होगा, तो कंजम्पशन कितना रिड्यूस हुआ, therefore रिडक्शन इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना रिडक्शन हुआ है, x माइनस 4x अपॉन 5, that is 5x minus 4x upon 5 which is x upon 5 kg। ठीक है, x upon 5 kg कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है, x upon
5 kg कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है. नाउ सी, बाय हाउ मच परसेंट अ हाउसवाइफ शुड रिड्यूस द कंजम्पशन. हमें ढूंढना है रिडक्शन इन कंजम्पशन का परसेंटेज. परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन. therefore परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन, ये क्या होगा? ये होगा रिडक्शन अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, रिडक्शन अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, रिडक्शन कितना हुआ? x बाय 5. ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनली हाउसवाइफ का कंजम्पशन कितना था? ओरिजिनली हाउसवाइफ का कंजम्पशन था x kg. ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू है x मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस विल बी x अपॉन 5x मल्टीप्लाइड बाय 100. x कैंसिल, 500 के साथ कैंसिल होगा 20. सो 20% रिड्यूस करना पड़ेगा हाउसवाइफ को शुगर का कंजम्पशन. देयरफॉर टू नॉट इंक्रीज द एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, the consumption of sugar must be reduced by 20%. अब 20% कम शुगर खानी पड़ेगी, नहीं तो खर्चा ज़्यादा होगा. ठीक है, तो दिस वॉज द होल मैप ऑफ द क्वेश्चन. ऐसे 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 स्टेप लिखना है, ऐसे सॉल्व करना है. ठीक है, 10th क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार. 20% बिल्कुल सही. ठीक है, समझ में आया तुमको? तो मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं टोटल, और 4-5 क्वेश्चन कुछ बचे हैं, बट दैट आई एम गोइंग टू, मेरी भी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, और ये मैं सॉल्व करूँगा इसके बाद वाले क्लास में. और आप लोगों का काम है कि आप पेशेंस से ये वीडियो देखो, पेशेंस से. इसमें हम पेशेंस खोओगे ना तो क्या होगा पता है? जैसे ही एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तुम्हें डाउट आने लगेगा. इसका मतलब मेरा वीडियो तुमने अच्छे से नहीं देखा है. मेरी बात याद रखो, मैं पूरे एक्सरसाइज में 2 से ज्यादा डाउट नहीं लूंगा. ये सबके सामने बता रहा हूं, 2 से ज्यादा डाउट मैं नहीं लूंगा. तो तुम कैसे भी करके ये जो भी मेथड मैंने एक्सप्लेन किया उसको समझो. तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं. मैं सिर्फ 2 कॉमन डाउट्स लूंगा पूरे एक्सरसाइज में से, क्योंकि उतने ही होने चाहिए. अदरवाइज व्हाट यू हैव डन इज यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियो प्रॉपर्ली. You have not understood the concept which I am trying to explain since past 1 hour, right? So watch the video properly and I'll see you in the next video. Bye bye.